وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, we begin from verse number 41 of Surah Al-Mumin, also called as Surah Ghafir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. And O my people, what for me that I call you towards salvation while you invite me towards fire. You invite me that I disbelieve in Allah and associate partners with Him. Ma laysa li bihilm, what not for me in it knowledge. And I invite you towards the Almighty, the most forgiving. और ऐ मेरी कौम, क्या बात है कि मैं तुम्हें दावत देता हूँ नजात की तरफ और तुम दावत देते हो मुझे आग की तरफ। तुम दावत देते हो मुझे कि मैं इनकार करूं अल्लाह को और शरीक ठहराऊं उसके साथ जिसका नहीं मुझे उसका कोई इल्म, और मैं बुलाता हूं तुम्हें या दावत देता हूं तुम्हें जबरदस्त खूब बख्शने वाले की तरफ. Who saying this? It's the same believer who accepted the message of Musa al-Islam and Harun al-Islam among the people of Fir'aun, and is also conveying the message of Islam and inviting the people towards the message of Islam, about which narrative we have started studying since yesterday. Some very powerful statements which he has made, and one among them is what we studied just now. He tells his people very clearly, I am inviting you towards your salvation, whereas when you are asking me to disbelieve in Allah or reject the message of Musa alayhi salam, you are actually inviting me towards fire. You are asking me to disbelieve in Allah and associate partners with him, whereas I am inviting you towards the Almighty, the most forgiving. What powerful statements. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. No doubt that what you invite me towards it, not for it any claim in this world, ولا في الآخرة, neither in the hereafter, وأن مردنا, and that our return towards Allah, and that the transgressors, they shall be the companions of the fire. कोई शक नहीं कि जिस चीज की तरफ तुम मुझे दावत देते हो उसकी तरफ नहीं उसके लिए बुलाने का बुलाने की कोई काबिलियत या पुकारे जाने की कोई काबिलियत दुनिया में और आखिरत में, और कि हमारा लौटना अल्लाह ही की तरफ है, और कि हद से तजावुज करने वाले वही आग वाले होंगे. फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद. फवक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू व हाक़ बिआलि फ़िरऔन सूअल अज़ाब. अन्नार अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअ अदख़िलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब. Then soon you will remember what I said to you, and I entrust my matter to Allah. Verily Allah is all seer of his slaves. So saved him Allah the evil of what they plotted, and encompassed the people of Pharaoh the evil torment, the fire,
they shall be presented or exposed to it morning and evening. And on the day will be established the hour. Allah will say, cause to enter the people of Pharaoh into the severest of punishment. अनकरीब तुम याद करोगे जो मैंने कहा तुमसे और मैं सुपुर्द करता हूँ मेरा मामला अल्लाह के यहाँ और अल्लाह बेशक अल्लाह खूब देखता है अपने बंदों को तो बचा लिया उसको अल्लाह उस बुराइयां से जो उन्होंने तदबीरें किए और घेर लिया फिरौन के लोगों को सख्त तरीन अजाब आग वो पेश किए जाएंगे उस पर सुबह और शाम और जिस दिन कायम हो जाएगी क़यामत की घड़ी अल्लाह फरमाएगा दाखिल करा दो फिरौन वालों को सख्त तरीन अजाब में सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला says over here the same person is now telling his people you will soon remember what I said to you all this advice this invitation I'm trying to convince you that what Musa alayhi salam is conveying to you is the truth he tried all his methods he did best what is best is possible finally he says وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ no I can't do anything beyond this it's only Allah who can give you the tawfiq no I entrust all the matter towards Allah verily Allah is all seer of his slaves so Allah subhanahu wa ta'ala says over here Allah protected him from all the misfortunes and all the plotting and the conspiracies hatched by Pharaoh and the people of Pharaoh. When Allah subhanahu wa ta'ala says, ultimately it was only the people of Pharaoh who had to meet destruction, not only in this world, but also will face the severest torment in the hereafter. This is the fate of those people who plot against the righteous believers and people who do the work of Islam or in spreading the message of Islam. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala's promise is always and will always remain in future also. So it's the work of da'wah that can protect the people from the conspiracies and the strategies adopted by the enemies of Islam towards destroying them. Ultimately, their plotting will only hit back on them and destroy them, and Allah will save the da'is, Allah will save those who spread the message of Islam and those people who do the work of reformation or the work of inviting the people towards Islam. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. And when they will dispute in the fire, then we will say, those who were weak to those who were arrogant, Inna kunna lakum taban, verily we were to you following. Then can you avail from us a portion of the fire? We'll say those who are arrogant, verily we are all in it. Verily Allah indeed will judge between his slaves. Verily Allah indeed has judged between his slaves. और जब वो झगड़ते रहेंगे आग में फिर कहेंगे जो कमजोर थे उन लोगों से जो तकबुर किए थे बेशक हम तुम्हारी पैरवी करते थे या ताबेदार थे फिर क्या तुम हमसे दूर कर सकते एक हिस्सा आग का कहेंगे वो लोग जिन्होंने तकबुर किया बेशक हम सब हैं इसमें बेशक अल्लाह ने यकीनन फैसला कर चुका बंदों के दरमियान That's right. No blame game on the day of Qiyamah will be of any use. You can't be there to blame anyone. Most often, we follow blindly what our parents do, our ancestors do, or our leaders tell us, or the influential people tell to us. We listen to X, Y, and Z, and we just follow blindly.
But on the day of Qiyamah, you may be caught on the wrong foot. And when Allah subhanahu wa ta'ala is about to going to throw you into the fire, then you will say, oh Allah, because of these people only I followed, because of these people only I was misled, because of so and so only I went astray, on account of so and so only I kept away from the Quran class. Because a lot of people are there, who tell you don't go to that Quran class. What is the big deal there? There's nothing much. You can go astray, don't go to all these places. Nauzubillah. And very innocently, such people come under the influence, and finally, on the day of Qiyamah, they will be shocked to see a different world altogether in front of them. And on account of their misdeeds or going astray or not keeping in touch with the Quran, on account of which they would have earned the wrath of Allah, and they will be thrown into hellfire. At that time, they will say, oh Allah, because of this sheikh, oh Allah, because of this scholar, oh Allah, because of this person, oh Allah, because of so and so, Allah, because of this leader, because of these chiefs, because of so and so. Allah subhanahu wa ta'ala would say, Allah, I gave you the intellect, right? I gave you brains. Why did not you use them? Who asked you to blindly follow them? And whom you are going to blame will wash the hands off and say, sorry, we do not know who you are. We are not forcing you to do, right? We only told you and you accepted. So therefore, there's no need. And I mean, absolutely impossible. Now you're trying to blame us. Doesn't make any difference. We're all in it now. Khalas. You should have used your brains. That is why it becomes important that you should study the Quran in order to know what is right and what is wrong. The Quran itself will guide you. What can be a better and more powerful guiding force than the Quran? इनकी बातें सुना, उनकी बातें सुना, फलां बोले, इनो बोले, उनो बोले. अरे तुम्हारी अक्ल कहाँ गई? अल्लाह ने अक्ल दिया ना, मौका भी दिया ना पढ़ने को, सीखने को कुरान. लोगों की बातों में क्यों आए? आज कोई तुम्हारा कोई काम आ सकता, पूछते हैं एक दिन आग में से हमारे लिए छुड़ा कर देखो, कोई नहीं छुड़ाने वाला. वो खुद आग में होंगे, तुमको कहां छुड़ाएंगे? अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन. वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नारि लिख़ज़नति जहन्नम उदऊ रब्बकुम युख़फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब. क़ालू अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात क़ालू बला क़ालू फ़दऊ वमा दुआउल काफ़िरीना इल्ला फ़ी ज़लाल. Will say those in the fire to the gatekeepers of the hell, call upon your Lord to lighten from us one day of the punishment. The gatekeepers will say, did not come to you your messengers with clear signs? They will say, yes. The gatekeepers will then say, then you only call, and not shall be the call of the disbelievers except in vain or except in error. और कहेंगे वो लोग जो आग में हैं, जहन्नम के दारोगों से, दुआ करो तुम्हारे रब से, या पुकारो तुम्हारे रब से कि वो हल्का करे हमसे एक दिन अजाब का. वो जवाब देंगे, यानी वो दारोगे जवाब देंगे, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाज़ेह निशानियों के साथ? वो जवाब देंगे, हाँ आए थे. फिर वो दारोगे कहेंगे, बस तुम ही पुकारो, और नहीं होगी पुकार काफिरों की सिवाय हकारत होने वाली. इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीना माज़िरतुहुम व लहुमुल लानतु व लहुम सूउद दार. Verily, we shall surely help our messengers and those who believed in the life of this world, and on the day will be established the witnesses, or the day will be standing the witnesses. The day not shall benefit the wrongdoers, maziratum, their excuses, and for them shall be curse, and for them shall be the evil abode or the evil home. बेशक हम जरूर मदद करेंगे हमारे रसूलों को और उन लोगों को भी जो ईमान ले आए दुनिया की जिंदगी में, और जिस दिन खड़े होंगे गवाह, जिस दिन नहीं फायदा देगा जालिमों को उनकी माजरतें, और उनके लिए लानत होगी और उनके लिए बुरा होगा ठिकाना या आखिरत का घर. वलक़द आतैना मूसल हुदा
वअवरसना बनी इसराईल अल किताब हुदम व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फिर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल अश्यि wal ibkar. And certainly we gave Musa alayhi salam the guidance, and we caused to inherit the children of Israel the book, or we made the inheritors the children of Israel the book, as a guidance and a reminder for men of understanding. So remain patient, verily the promise of Allah is true. Wastaghfir lizambika, and seek forgiveness for your sins, and glorify with the praises of your Lord in the evening and in the morning. और यकीनन हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत, और हमने वारिस बनाया बनी इसराइल को किताब का, जिसमें हिदायत और नसीहत थी अक्ल वालों के लिए, यानी तौरात। बस सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और बख्शिश तलब करो अपने गुनाहों के लिए, और तस्बीह करो अपने रब के हम्द के साथ शाम को और सुबह को. This is very, very important instruction Allah is giving for those people to spread the message of Islam, and all of us need to spread the message of Islam in our own capacities to whatever extent we have knowledge and to whatever extent is possible. ये हर मोमिन पर जो है ये फर्ज ऐन है कि वो दीन की दावत लोगों के सामने पेश करे, अपने घर वालों की तरफ, अपने घर वालों के पास, कि हाँ, फिर रिश्तेदारों के पास पहुंचाओ, फिर पड़ोसियों में, अपने दोस्त अहबाब से, जिनसे जिनसे भी आपका जो है ताल्लुक है और कांटेक्ट होता है, convey the message of Islam. But in the process of conveying the message of Islam, a lot of care has to be taken. You have to convey it with wisdom. You have to convey it with a lot of patience. Never get provoked. Never become provocative. Never react. सब्र से, तहम्मुल से, मोहब्बत से इस दिन की दावत दी जाती है. And remember, Allah subhanahu wa ta'ala's promise is true, where He will definitely reward you for the hard work that you are putting in. This is the promise of Allah. But in the process of conveying the message of Islam, also we make a lot of mistakes. So therefore, wastaghfir li dhanbika. That's why the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, मैं हर रोज 70 मरतबा अल्लाह से मगफिरत चाहता हूँ. Such a saintly soul. Can we least imagine the Prophet committing any mistakes? Why should he recite astaghfar 70 times in a day, as he says? Which means that in the process of conveying the message of Islam and doing the work of Islam, there will be several shortcomings, lapses, faults, and mistakes that we may be committing most often inadvertently. गैर शौरी तौर पर बहुत से गलतियां हो जाती होंगी, तो बार बार अल्लाह से मगफिरत तलब करते रहना चाहिए, और अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहना चाहिए, for having given us an opportunity to convey the message of Islam and to practice Islam. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar, evening and the morning. innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fastaiz billah innahu huwas samiul basir. Verily, those who dispute concerning the signs of Allah without the authority having come to them, naught is in their breasts except pride, not they will be able to attain it. So seek protection in Allah, or seek refuge in Allah, verily He only is the all hearer, all seer. बेशक लोग झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में बगैर कोई सनद आए उनके यहाँ, बेशक नहीं उनके सीनों में या दिलों में सिवाय किबर है, जिसको नहीं वो हासिल कर सकते या पहुंच सकते उसकी तरफ. बस पनाह ले लो अल्लाह की, बेशक वही है खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला. लखल्कुस समावाति वल अर्ज़ि अकबरु मिन खल्क़िन नासि वलाकिन अक्सरन नासि ला यअलमून. Surely the creation of the heavens and the earth is far greater than the creation of the people, and but most of the people ला यअलमून, not they know. जरूर आसमान और जमीन की पैदाइश कई बड़ी चीज है इंसान की पैदाइश से भी, लेकिन अक्सर लोग नहीं वो जानते. वमा यस्तविल आमा वल बसीर वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति वलल मुसी क़लीलन मा ततज़क्करून इन्नस साअता लआतियतुन ला रैब फ़ीहा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून. And not can be the same the blind
and the seer, and those who believed and did righteous deeds, and neither those who commit evil. Little what you pay heed. Verily the hour surely will come. Inna sa'ata la'atiyatul la rayba fiha walakin aktharun nasi la yu'minun. Verily the hour surely will come, no doubt in it, and but most of the people la yu'minun, not they believe. और नहीं बराबर है अंधे और देखने वाला, और जो लोग ईमान लाए और अमल किए नेक, और ना वो जो बुराइयां करते हैं, यानी वो भी एक नहीं हो सकते। बहुत थोड़ा है जो तुम नसीहत हासिल करते हो। बेशक क़यामत की घड़ी जरूर आने वाली है, नहीं कोई शक हो उसमें, लेकिन अक्सर लोग नहीं वो ईमान लाते। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। And said your Lord, call me, I will respond to you. Verily those who show arrogance from my worship soon will enter Jahannam or hell humiliated. और कह चुका आपके रब ने, पुकारो मुझे, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक जो लोग तकब्बुर करते हैं मेरी इबादत करने से, अनकरीब वो दाखिल होंगे जहन्नम में जलील खार होकर। Allah subhanahu wa ta'ala says, call me, I will respond to you, I listen to your calls. Why are you calling X, Y, and Z and others who don't have any power to help you? They are themselves dependent on Allah. Allah subhanahu wa ta'ala is the Al-Ghani, wa nahnu al-fuqara. We are all dependent on Allah. We are all poor. Allah is the one who owns the treasures of this universe. He is the Rabbul Alameen. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah has said this in Surah Baqarah as well. O Prophet, whenever my slaves ask about me, say I'm very near to them. I respond to the call of the caller when he calls me. So let them have faith in me. Let them believe in my commandments so that they may be on the righteous path. Allah is closer to us than our jugular vein. हमारे रगे गर्दन से भी अल्लाह हमारे से करीब है। हाथ उठाने से पहले अल्लाह जानता है क्या हम उसके पास पूछने वाले हैं। वो हमारे दिल की हालत तक जानता है, हमारे नियतों को से वाकिफ है। He knows us thoroughly in and out. Call him. Don't be formal in calling him. Have to have a heart-to-heart conversation with him. Spill out all your issues before him and leave the rest to him to give it in his own inimitable style. वो अपनी शान से देगा। मांगना हमारा काम, देना उसका काम। Prophet has said, जब बंदा हाथ उठा के अल्लाह के सामने दुआ करता है तो अल्लाह को शर्म आती है उसके हाथ को खाली हाथ उसको लौटाए। When a slave of Allah subhanahu wa ta'ala lifts his hand before him, Allah feels embarrassed and shy to send his hands empty-handed. He always is there to give, to give, to give, but he knows when to give, how to give, in what way to give, how much to give. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Allah is the one who made for you the night that you may take rest in it and the day bright. Verily Allah is surely full of grace upon people, but most of the people la yashkurun, not they give thanks. That is Allah, your Lord, the creator of everything. There is no God except him. Then where are you getting deluded away? Thus were deluded those who used to, in the signs of Allah, yajhadun, reject or deny. अल्लाह वो ज़ात है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को ताकि तुम सुकून हासिल करो उसमें और दिन को रोशन। बेशक अल्लाह बड़ा फजल फरमाता है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग नहीं वो शुक्र करते। ये अल्लाह तुम्हारा रब, पैदा करने वाला हर चीज का, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, फिर कहाँ तुम बहके चले जा रहे हो। इसी तरह बहक गए वो लोग भी जो थे अल्लाह की आयतों का इनकार करने वाले। इंशाल्लाह we'll continue the rest of the verses inshallah tomorrow. Please have a look at the WhatsApp message at least 5 minutes before the class commences. Since I'm so far away and have several programs lined up,
I'm trying my best not to miss the class, but keep a close watch on the WhatsApp update since you're there in the group. Hopefully, looking forward, inshallah, to meet you tomorrow, same time. Jazakallah khair. And inshallah, we'll try to complete the surah as well, inshallah. Jazakallah khair. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.